Good morning, everyone, and a very, very warm welcome. I'm Ann Thomas. I head communications for Arya.ag, and it is a great pleasure to have all of you. We made a request, and all of you have come here today to join us on something that means a lot to us in terms of smart farms or farmers and FPOs. And we are very delighted to make this mark today as we take technology further in to the farms and to the doorstep of our farmers. This is not possible without all of you here, and I wanted to specially take some time to thank the media who have been supporting us through our journey over the past 10 years. Your support has made it possible for us to grow the way that we have and to make the communication quite about our resilient growth quite possible. Before we jump into a certain introductions, I just wanted to set the context by running a video for you so that you will understand why the people here are so important to say these stories. Among us are farmers and representatives of FPOs. We have CVRPs, who are a community value chain resource people who work with farmers and FPOs to take our technology forward. We have lots of our technology partners here as well who make the Smart Farm Center possible. Just to understand and get that context about why we are here today, I'd like you to be patient enough to watch one of these videos from here. Thank you. We are trying to establish smart farm centers. These centers are primarily going to be managed by the community service organizations. The objective of this smart farm centers are that various services to the farmers are given at one doorstep, basically towards sustainable agriculture. So you will get, for example, a soil testing, drone services for application of pesticides, various mechanizations inputs, etc. सध्या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना असलेला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे बदलत्या हवामानामुळे होणारं नुकसान. याच्यासाठी आम्ही काय करतोय की या प्रोजेक्ट उन्नतीच्या मार्फत शेतकऱ्यांना सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरकडे कसं घेऊन जायचं यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. त्यामध्ये आम्ही त्यांना इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंटबद्दल शिकवतोय. कीटकनाशक आहेत, बुरशीनाशक आहेत, याचा वापर कमी करून आपल्याला नैसर्गिक शेती कशी करता येईल, BBF टेक्निकबद्दल सांगतोय. 150 मीटर पाऊस पडल्यानंतर सगळे शेत वाहून गेले, सगळं पिकाचं पण नुकसान झालं. पण आपल्या सरीवरंबा पद्धतीमुळे आपल्या पावसातलं जे पाणी आहे, आपल्या वावरातलं जे पाणी आहे, सगळं पाणी शेतातून बाहेर निघून गेलं आणि आपलं पीक कायम ह्या चांगल्या एकदम बेटर कंडिशनमध्ये सध्या उभं आहे. या सरीवरंबा पद्धतीच्या फायद्यामुळे समजा ते पेरल्यामुळे हा फायदा झालेला आहे. आमच्या शेतामध्ये आम्ही सगळ्यात आधी समजा सर्वात प्रथम आमच्या APCमध्ये 500 फार्मर जोडलेले आहे. त्यामध्ये आम्ही त्यांना माती परीक्षण सांगितलेलं आहे. सर्वात आधी आपल्या शेतीचं पोत खूप बिघडत चाललेलं आहे. त्यामध्ये माती परीक्षण करताना तर आम्ही फ्रीमध्ये ते माती परीक्षण सर्व शेतकऱ्यांना करून दिलेलं आहे. तर माती परीक्षण करताना जो रिपोर्ट येते त्याच्यामध्ये खताच्या मात्रा दिलेल्या आहेत. तर खताच्या त्या मात्रा त्या प्रमाणात दिल्या तर ते पण खत नियोजन जर शेतकऱ्यांना समजलं ते पण सोयीस्कर झालेलं आहे. तसंच आर्या शेती ॲप हे आम्ही शेतकऱ्यांना डाउनलोड करून दिलेलं आहे. तर ते घर बसल्या पाहू शकतात की आपल्या शेतामध्ये आपल्या शेतीचं कुठं पाणी जास्त प्रमाणात झालेलं आहे किंवा कुठल्या अळीचा आपल्या पिकांवर अटॅक आलेला आहे. तर ते शेतकरी घर बसल्या ते पाहू शकतात. माती परीक्षण केल्यानंतर थोडंसं खताची मात्रा वगैरे सगळी तुमच्या लक्षात आली आणि थोडंसं पैसे पण वाचले, आहे की नाही. रासायनिक म्हणजे घटकापासून थोडं दूर गेलो, पैसे पण वाचले आणि याचा पण खूप सारा फायदा झालेला आहे. या प्रोजेक्ट उन्नती अंतर्गत आम्ही शेतकऱ्यांना ड्रोननी फवारणी फ्रीमध्ये करून देतोय. मग आमच्या इथे ड्रोनची फवारणीचा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. याचे फायदे असे की या फवारणीमुळे वेळेची बचत होते, 80% पाण्याची बचत होते, लेबरचा खर्च वाचतो, सर्व इकडे सारखी फवारणी होते. यामध्ये एका एकरामध्ये फक्त 10 मिनिटच लागतात फवारणी करण्यासाठी. याच्यात GPS असल्यामुळे सर्वत्र सारखी फवारणी होते. साधी फवारणी करायची असली तर त्यासाठी 3 व्यक्ती लागतात, एक फवारणीसाठी, एक स्पेशल पाणी येण्यासाठी आणि एक औषध बनवासाठी. असे तीन व्यक्ती लागतात. आणि ट्रॅक्टरनं जर करायची असली तर त्यासाठी म्हणजे
4 व्यक्ती लागतात. कसं जे वायरिंग असते ते आणण्यासाठी, हे फवारण्यासाठी. आणि त्यामुळे आपल्या पिकाचं पण हानी होते वायर ओढल्यामुळे. आणि वेळेची म्हणजे इथं कसं आहे 10 मिनिटात एक एकर होते. साध्या फवारणीसाठी 2 तास तरी लागतात, कमीत कमी 2 तास लागतात. आमच्या फील्ड स्टेशनला आम्ही फायलोचं वेदर स्टेशन लावलेलं आहे. ह्या ॲपच्या माध्यमातून आम्हाला आज किती वेगाने पाऊस येत आहे, किती MM पाऊस होत आहे हे आणि हवा किती प्रमाणात आहे हे सगळं आम्हाला हे ॲपमुळे माहिती मिळत आहे. आमच्या APC-मध्ये आम्ही ट्रायकोडर्मा पण उपलब्ध करून देत आहे. ट्रायकोडर्मा आम्ही स्वतः बनवतो आमच्या APC-मध्ये आणि त्यांचा शेतकऱ्यांना नक्कीच फायदा झालेला आहे. याशिवाय काय झालं आहे, शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खताचा वापर केल्यामुळे शेतीचा म्हणजे जे जमिनीचा पोत आहे ते पूर्ण खराब करून टाकलेलं आहे. प्रोडक्टिव्हिटी पूर्ण कमी झालेली आहे. सोयाबीनचं जे उत्पन्न आधी व्हायचं ते आता सध्या होत नाही आहे. पूर्ण प्रोडक्टिव्हिटी रासायनिक खताच्या अतिरिक्त वापरामुळे म्हणजे संपून टाकलेली आहे. आणि म्हणजे सगळं ऑर्गॅनिक समजा हे आणि आपल्या नैसर्गिक कल्चरनुसार नैसर्गिकरित्या विषमुक्त शेती करण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. आणि पुढच्या पिढीला सुद्धा चांगल्यात चांगलं समजा आपल्याला खाद्य, चांगल्यात चांगलं समजा आपली जमीन मिळावी या दृष्टीने आमचा छोटासा आमचा एक प्रयास आहे. And the beauty of this is that no one single enterprise is going to actually contribute for the services. Various different organizations are going to collaborate and establish this centers. That's the beauty of it. So it's a collaborative effort for the betterment of farming community. So I hope that this gives you a slight context, and what we are doing today, we have the people that you have heard, they are here today, and before we start and before they speak about their ground experience, may I request our farmer didis and our CVRP didis and all of you to please light the lamp. Nathan sir, Anand, could you please do the honors? Mr. Chatanathan is the managing director of Arya.ag. Anand Chandra is here. He's the COO of Arya.ag. And we have our CVRP didis, Suman didi, and farmers. May I please request you to light the lamp? Thank you all. Could we please wait for a photo op? Thank you. Thank you so much. So once again, welcome to this morning, almost afternoon, as we sit together and talk about. I do want to clarify that it's not about, an announcement on smart farm centers being started. It's a reiteration once again that when technology comes together with a layer of trust, then change is possible, and change happens all together. And I would request Prasanna Rao, the CEO of Arya.ag, to come forward and give you some more information on that. Good morning. We didn't mean this to be so formal. I think I'll just start by one
quote that sort of really inspires us and we hold very close to our hearts, that India's place in the sun would come from the partnership between the wisdom of its rural people and the skills of its professionals. That is what Dr. Kurian said many years ago, and I really feel that that is what is the true spirit of partnership that can really change, or in a way transform rural India and solve problems in rural India. And what we are here to witness today or share today is basically a testament of this statement. At Arya.ag, we've worked on the post-harvest side of agriculture. We've sort of grown very sustainably, the only profitable agri-tech in the country, also significantly impacting the overall post-harvest ecosystem in the country. As we speak today, as a company, we store and manage about 3% of India's total grain production. But please understand that as a company, what we do and influence is probably a small part of the entire challenge that farmers in India face. We are talking about post-harvest, we are talking about access to finance, we are talking about linking them to markets. But that is again only one part of many problems that farmers face. Now, as an organization, are we in a position to solve all of this alone? That is not possible. And which is where I think when Dr. Kurian said that it is about this partnership that can really transform India and the challenges that face Indian agriculture, it is about this partnership that the organization at Arya and we at Arya believe very strongly in. The partnership between the farmers, the community, and those as professionals. Now, as professionals, we are also different kinds of professionals coming in with different kinds of expertise. Now, if you are able to bring that together in a manner where it is a win-win for everybody, again, sounds cliche to say win-win, but if it is not a win-win, it will never succeed. So we need to work on models which somehow bring that win-win proposition together, where it is not just about one agri-tech company coming in and saying that we are going to change the country. It is about where this partnership brings in the community, brings in the farmers, brings in different institutions, including the government, including other larger corporations who come together to solve these array of problems that Indian agriculture faces. जब हम इसके बारे में बात करते हैं, और मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बोलूँगा, प्लीज़ पार्डन माई हिंदी एंड माई इंग्लिश, आई एम नॉट परफेक्ट इन ईदर, बट मेरा ये एक मानना है कि अगर हम इस साझेदारी के साथ काम नहीं करेंगे तो ये जितने हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं और समस्याएं हैं वो कभी सॉल्व नहीं हो सकती. और वो इस तरीके से होना पड़ेगा कि वो बहुत ही सरल हो, सिंपल हो. आज जो भी सोल्यूशंस हम बात करते हैं, इफ़ दे आर नॉट सिंपल, दे विल ऑलवेज बी मिस्टिफाइड. When we talk about technology in agriculture, मैं जब पहली बारी कुछ साल पहले फील्ड पे गया, तो मुझे जब मैंने किसानों से बात की कि भाई ड्रोन्स हैं, तो उनके दिमाग में ये है कि ड्रोन्स मतलब कुछ ऐसा है जो फॉरेन है, मे बी वो आउट ऑफ द अर्थ है कोई चीज़, हमारे साथ तो कभी नहीं जुड़ सकता वो. तो हम उस टेक्नोलॉजी को डीमिस्टिफाई कैसे करें? हम कहते हैं कि भाई आप ऐप पे जाके ना 2 बटन क्लिक करोगे तो आपके पास ही चीज़ें आ जाएंगी. ये 25 साल पहले या 20 साल पहले जब हम पहली बारी अमेज़ॉन के बारे में सुनते थे तो हमें भी ऐसे ही लगता था. तो आप सोचिए वो किसान जो आज फील्ड पे है तो उनको कैसे लगेगा. तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं, वो सॉल्यूशंस एक व्यक्ति या एक कंपनी नहीं दे सकती, उसके लिए हमें एक साझेदारी बनानी पड़ेगी. और वो जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं वो इतनी सरल होनी चाहिए कि किसान को इमीडिएटली समझ में आना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे. तो ये जो हम स्मार्ट फार्म सेंटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा प्रयास है, इट्स एन एफर्ट टू डीमिस्टिफाई टेक्नोलॉजी एंड टू ब्रिंग इट टू द डोर स्टेप ऑफ द फार्मर बाय द फार्मर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो हमने एक और चीज़ सीखा अपने 13 साल के इस जर्नी में कि हम जब एज प्रोफेशनल्स आते हैं तो हमें लगता है कि हम ना भगवान हैं, हमें सब कुछ पता है, हम जानते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे. लेकिन पहले ही साल हम लोगों को समझ में आया कि हमें कुछ भी नहीं पता है.
जिनको पता है वो तो वहाँ हैं जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, वो किसान को पता है. तो हाउ डू वी मेक श्योर दैट whatever solutions we bring in, they are embedded in their reality, that they understand. And जब वो खुद उस चीज़ को चलाएंगी तभी उनको उस पर भरोसा होगा. The trust that I was speaking about, that whatever all these problems are, if I have to go and interact with a set of farmers, then it has to be in a manner where they can trust us, trust me as that entity who's coming in to work with them. So which is where I think as an organization, what we are trying to do with the smart farm centers is to see how we can democratize technology so that it is available at the farm gate in a manner that it is clearly and very simply understood by the constituents who are going to use it. So उस प्रयास के साथ हमने ये स्मार्ट फार्म सेंटर्स बनाया. एंड ये पार्ट कि क्या हम सब कुछ कर सकते हैं, और उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू आवर पार्टनर्स हु हैव ट्रस्टेड इन अस, हु हैव ट्रस्टेड इन द टेक्नोलॉजी. वी हैव रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज. We have representatives from BharatRohan, we have which operates drones. We have representatives from Fyllo, which enables soil testing on the ground. We have representatives from FarmBridge, which in collaboration with KVKs and with other institutions developed very practical package of practices which helps farmers enhance their yields. And we have our partner from Finhart, who brings in insurance at the farm gate, at the doorstep of the farmer. So the whole idea is that when we talk about these problems, these are layers of problems. And one entity cannot do it. And will that be possible to do without the involvement of the community, of that constituent who's most significantly impacted with it? No. तो ये जो स्मार्ट फार्म सेंटर का आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को फार्मर के डोर स्टेप पे ले जाए ताकि किसान उसको बहुत ही आसानी से यूज़ कर सके एट टू बिगिन विथ नो कॉस्ट. So the whole idea, the challenge that we faced when we started out this was that how do we build a model where the farmer does not pay for it but the services are still available. And हमें वहाँ पे पता लगा कि ये फिर भी पॉसिबल है. लाइक वी वर डिस्कसिंग दिस मॉर्निंग सेइंग दैट देयर आर स्टार्टअप्स हु केम इन, रेज्ड अ लॉट ऑफ मनी, बर्न्ड द मनी इन दिस प्रोसेस. तो अगर हम उस प्रोसेस में जाएंगे तो ये कभी बढ़ नहीं सकता. तो who pays for these services if the farmer is not paying? And which is where the secret sort of unveiled upon us, saying that it is not necessary that the farmer has to pay for it. There are other constituents in the ecosystem who are willing to pay for it. There are buyers who say कि भाई हमें अगर इस टाइप की प्रोड्यूस मिले और ये प्रैक्टिसेस अगर उसमें फॉलो की गई हों तो इसके लिए जो खर्चा है हम पे करने के लिए तैयार हैं. सो वी डिड एन एस्टिमेट. अगर एक कॉरपोरेट 2% अपने टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट का सेट असाइड करता है तो उसको ये सारे सर्विसेज के साथ वो प्रोड्यूस मिलेगा जिससे कि उनको करीबन 15 से 20% का फायदा हो सकता है. So which is where our thought was that instead of asking farmers to pay, we ask the buyers to pay. There are institutions who work with farmer organizations and they have budgets. Can we channelize those budgets to make sure that these services are available at the farm gate for the benefit of farmers? So which is what I think we've been able to sort of break the myth of, to say इसको अगर काम करना है तो भाई या तो आपको इस पे बहुत सारे पैसे गंवाने पड़ेंगे या तो सब्सिडी होगी तभी काम हो सकता है. एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने ये एक चीज़ शुरुआत वाले दिन से ही किया था कि कोई भी मॉडल हो सब्सिडी पे नहीं बन सकती. तो उसके लिए कोई ना कोई पे करेगा. ज़रूरी नहीं है कि वो किसान ही पे करे, उसके लिए कोई और भी पे कर सकता है. सो विच इज़ हाउ अ लॉट ऑफ आर सर्विसेज आर ऑल्सो बिल्ट एट Arya.ag एंड विच इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द स्मार्ट फार्म सेंटर. और दूसरी चीज़ जो मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि आज हमारे साथ यहाँ पे हमारे कुछ कम्युनिटी लीडर्स हैं, किसान हैं. दीज आर द पीपल हु रन दीज सेंटर्स. बिकॉज हमने ये देखा कि अगर हम वहाँ पहुँच जाते हैं दिल्ली से और कहीं से तो हम पे कौन भरोसा करेगा.
तो वो भरोसा इसीलिए आता है क्योंकि वो उन्हीं में से कोई एक लीडर है, कोई एक व्यक्ति है जो उस फार्म सेंटर को चलाता है, और उसकी वजह से वो भरोसा उसमें होता है कि हम इस चीज़ को कर पाएंगे. सो ये एक ऐसा हमारा प्रयास है विच इज़ टू से दैट these problems can be solved if we have a strong partnership between professionals and the community and the overall agri ecosystem, which are buyers, other development actors, maybe the government someday. And which is why we've sort of invited you today as we have unveiled our 17th smart farm center. आज हम कोई launch नहीं कर रहे, हम आपके पास सिर्फ इसलिए आए हैं कि ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ और आगे तक पहुँचे. आज हमारे साथ में भी 25 बायर्स जुड़े हैं, ऐसे हमारे साथ और 200 बायर्स जुड़े, ताकि ये जो आज 17 स्मार्ट फार्म सेंटर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो आगे को बढ़ के शायद 250 हो जाएं. तो विद दैट ऑब्जेक्टिव is where we have sort of come together and we've sort of requested your presence today. And before I sort of move forward, I would only say that this is an initiative which is just a follow-on of the smart FPO process or initiative that at Arya we started about a year and a half ago. The whole idea was FPOs हैं, but क्या वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने आप को और सक्षम बना पाएँ? Can we increase the economic resilience of farmer organizations by using technology? And which is where the need for such a smart farm center was felt. तो ये पूरा प्रोसेस जो हम कर रहे हैं वो FPOs के साथ जुड़ के हम ये चीज़ को कर पा रहे हैं. And it is that reason that in just 10 months we have been able to secure 17 smart farm centers and another 12 are already in process. And mind you, without any investment from our side, nor any financial investment. I'm saying a lot of effort goes in, but investment from the farmer organizations. So which is the power of this whole model, and which is where I thought that it may be good to just come and share some of these experiences with you, our learnings with you. It is not perfect. We struggle every day. ये दीदीज़ हमारी जो दीदी यहाँ बैठी हैं वो जब आपसे बात करेंगी तो आपको और समझ में आएगा कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है. I think that is where I thought I'll just sort of give that context of what we are trying to do. When we started, people felt it's a little crazy, but I really think that crazy things are needed to solve these very small, very simple yet very large problems. So we are being a little crazy. हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, हमारे पार्टनर्स भी, थैंक यू फॉर योर क्रेजीनेस. और हमारे जो किसान भाई बहन भी हैं, आपके भी इस थोड़े से पागलपन के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा. और मैं अब without sort of me taking and sharing about this, I would basically request जो हमारे पार्टनर्स फील्ड से आए हैं हमारे साथ, वो यहाँ आए, और मैं भारती दीदी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आके जो आपका अनुभव रहा है आप एकदम फ्रीली बोलिए, जो आपको जैसा लगा. आप चिंता मत करिए. आप सुबह मुझे बोल रही थी कि हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है. आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे बोलिए. जो आपका जो अनुभव रहा है वो हमारे साथ एक बार शेयर करें. सो प्लीज़ भारती दीदी. थैंक यू सर. सभी को नमस्ते. मैं महाराष्ट्र से हूँ. मेरा नाम भारती स्वप्निल सातिंगे, एट पोस्ट हाथगांव, तालुका मूर्तिजापुर, डिस्ट्रिक्ट अकोला. अभी मैं आर्या में ड्रीम विजन एपीसी के माध्यम से CVRP पोस्ट पे काम कर रही हूँ. तो हमारे एपीसी का नाम है ड्रीम विजन एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, हाथगांव, तालुका मूर्तिजापुर, डिस्ट्रिक्ट अकोला. हमारा जो स्मार्ट फार्म सेंटर है वो हमारे एपीसी के पास ही है. सबसे पहले तो मैं 100 फार्मर के साथ जुड़ी हुई हूँ, 100 फार्मर के साथ काम कर रही हूँ. हमने प्रोजेक्ट आर्या के बारे में, प्रोजेक्ट उन्नति के बारे में एंड स्मार्ट फार्म सेंटर के बारे में फार्मर को बताया कि मेन उद्देश्य क्या है प्रोजेक्ट उन्नति का, स्मार्ट फार्म सेंटर का. तो हमने बताया कि
जो लागत हवामान अनुकूल खेती कैसे कर सकते हैं, जो फार्मर का लागत खर्च कम करके उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में हमने फार्मर को जानकारी दी हुई है। जैसे आर्य शक्ति आपके द्वारा से हम डिसीज़ कौन सा डिसीज़ है इसके बारे में वो जानकारी ले सकते हैं। मैंने 100 फार्मर के मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके दिया है, जिनकी वजह से वो डिसीज़ का भी डिसीज़ जो रहता है वो स्कैन करके वो देख सकते हैं कि ये कौन सा डिसीज़ है, इनकी जानकारी भी उनको मिल रही है। और आर्य शक्ति आपके द्वारा से हम जो स्मार्ट फार्म सेंटर में जो ट्रेनिंग लेते हैं, कभी कभी फार्मर नहीं आ सकते थे, तो इसीलिए हम कम्युनिटी पोस्ट में जो पोस्ट डालते हैं तो फार्मर घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल में वो देख सकते हैं कि स्मार्ट फार्म सेंटर में कौन सी ट्रेनिंग मिली है, किस बारे में बताया है, इस सब के बारे में फार्मर घर बैठे बैठे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आर्य शक्ति आपका। और स्मार्ट फार्म सेंटर के माध्यम से हम फार्मर को POP पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के बारे में भी बताते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा की बीज प्रक्रिया, POP BBF पद्धति से पेरनी करना, जिसे मराठी में हम सरी व रंबा बोलते हैं, इसके बारे में हम फार्मर को बता सकते हैं। और फेरोमेन ट्रैप्स का यूज़ करना और येलो स्टिकी स्ट्रैप यानी पिवड़े चिकट सापड़े, इसका यूज़ कैसे करते हैं, डिसीज़ के बारे में बताना, ये सब जानकारी हम स्मार्ट फार्म सेंटर के माध्यम से हम फार्मर तक पहुंचाते हैं। और हमारे महाराष्ट्र में सर सबसे ज़्यादा सोयाबीन क्रॉप लिया जाता है, जिस पे विल डिसीज़ मतलब मर रोग का प्रादुर्भाव सबसे ज़्यादा होता है। तो उसको कम करने के लिए हम ट्राइकोडर्मा जो कि एक जैविक बुरशीनाशक है, उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, और वो हम हमारे स्मार्ट फार्म सेंटर में भी बनाते हैं और फार्मर को एकदम कम रेट में बेचते हैं। मतलब हमारे स्मार्ट फार्म सेंटर में भी मैं ही बनाती हूँ ट्राइकोडर्मा, और उसका पर केजी मतलब 120 रुपये 1 kg, सॉरी थोड़ा मराठी में बोल सकती हूँ। ऐसा इन सब के बारे में हम जानकारी फार्मर को देते हैं। अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, सर ने मुझे थोड़ा सा बुलाया, रिक्वेस्ट की, हमने बात की, तो मैं सर अब अपना अनुभव बताती हूँ। मेरा ना BSc एग्री कंप्लीट हुआ है, मैं एग्री कोर्स हूँ, फिर भी मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। जब मैं कॉलेज में थी ना, तब मुझे इतना अनुभव ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। मैं फार्मर की ही बेटी हूँ, पर तभी भी मैं खेत में कभी नहीं गई थी, कभी मुझे पता भी नहीं था खेत में पापा क्या डालते हैं क्या नहीं, खेती इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कॉलेज भी किया, एग्ज़ाम भी दी, पर कुछ भी समझ नहीं आता। पर जब से मैं स्मार्ट फार्म सेंटर में ज्वाइन हुई हूँ प्रोजेक्ट उन्नति में, तब मैं फार्मर के खेत में गई, उनका अनुभव देखा, खेत कैसे डालते हैं, पेरनी कैसे करते हैं, हार्वेस्ट कैसे करते हैं, उत्पादन कैसे लेते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोजेक्ट उन्नति के थ्रू मुझे मिली है। एक बेस्ट अनुभव मेरे लिए था। थैंक यू। अभी हमारे साथ बिहार से भी दीदी आई है, सुमन दीदी, तो मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी आके अपना स्मार्ट फार्म सेंटर का थोड़ा अनुभव शेयर करें। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्ते। मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम सुमन कुमारी है। मैं समन्वय एग्रो प्रोड्यूसर में CVRP पद पे काम कर रही हूँ। हम लोग के गांव में एक स्मार्ट फार्म सेंटर है, जो कि किसानों की हेल्प के लिए ही बनाया गया है, जिसमें हम किसानों को उसमें सॉइल टेस्टिंग मशीन है, हमारा वेदर स्टेशन है। तो हम लोग क्लाइमेट चेंज पे उसमें हम लोग को जानकारी दिया जाता है। जैसे वेदर स्टेशन है, वेदर स्टेशन में हम लोग किसानों को क्लाइमेट चेंज पे जानकारी देते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा फाइलो ऐप है, उसमें बता देता है कि आपके मतलब यहाँ पे अभी जैसे कि बारिश होने वाला है, दिन में जैसे पूरा दिन दिखाएगा कि बारिश नहीं है,
फिर जैसे कि 1 घंटे या फिर 5 घंटे बाद बारिश आ गया तो हमारा जो आर्या शक्ति एप्लीकेशन है उसमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप मतलब आपके यहाँ पे बारिश 5 घंटे बाद आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने किसान को बता देते हैं, और किसान जिससे अपना जैसे कि पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है या फिर उन्हें सिंचाई करना है तो वो कर लेते हैं। और जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर वेदर स्टेशन हमारे स्मार्ट फार्म सेंटर पे नहीं लगा था तो वो मतलब जैसे वो जाते थे पहले और छिड़काव कर देते थे और मौसम फिर ख़राब 2 घंटे बाद हो जाता था, उनको पता नहीं रहता था, जिससे किसानों का कॉस्ट बढ़ जाता था, वो दवा बेकार हो गया। अब स्मार्ट ये वेदर स्टेशन से हमें हमारे किसान को लाभ मिला है, उनका लागत भी कम लग रहा है, जो खर्च होता था वो बच गया, उनका सिंचाई भी नहीं की, अगर सिंचाई का करने जा रहे हैं तो उनका बच गया, इसका लेबर का कॉस्ट बच गया, फिर जाके उनका वो जो सिंचाई करते हैं मोटर का ये सब खर्च बच गया। इससे किसान को बहुत नया टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो अधिक से अधिक चाहते हैं कि हमें वेदर का जानकारी मिले। और देखिए जैसे कि हम लोग के यहाँ पे साइक्लोन आया है, साइक्लोन बिहार में आया था, तो हम जिस छठ पूजा दिवाली के आसपास में ही साइक्लोन आया था, तो हम लोग का क्या है किसान हार्वेस्ट करने ही जा रहे थे, सोचे कि छठ दिवाली आ गया है छोड़ देते हैं उसके बाद करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन पहले आ गया, तो हम फिर उनको आर्य शक्ति एप्लीकेशन के माध्यम से, हमारे जो 100 किसान जुड़े हुए आर्य शक्ति एप्लीकेशन के माध्यम से उनको हम जानकारी दे दिए। तो वो क्या किए कि जैसे 2 दिन पहले ही अपना हार्वेस्ट कर लिए पूरा खेत का, तो उससे उनका बचत हुआ। और जैसे कि कुछ जो किसान हैं हाँ 10 किलोमीटर दूर है हम लोग के गांव के, ये बात हम लोग को पता चला तो वो बात हम सोचे सबसे साझा कर दें। तो वो बोले कि उनको पता नहीं था, वेदर स्टेशन वहाँ नहीं था, तो वो क्या किए कि वो नहीं हार्वेस्ट किए, वो छठ दिवाली का इंतज़ार कर रहे थे कि चलो ये बीत जाएगा तब हम करेंगे, तो वो नहीं कर पाए, जिससे उनका धान बारिश की वजह से पूरा खेत में ही गिर गया और धान मतलब अच्छा नहीं हुआ, मतलब वो जो मैच्योर्ड भी धान था वो भी बर्बाद हो गया। ऐसे वो अब हार्वेस्टर से हार्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी हमारा जो किसान है 100 किसान है वो तो अपना उतना बचत कर लिए, और वो तो वेदर स्टेशन का हमारा बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। और हमारे स्मार्ट फार्म सेंटर में सॉइल टेस्टिंग मशीन भी है, जिससे कि हमारे यहाँ के किसान की समस्या था कि उर्वरक बहुत ज़्यादा डालते थे खेत में, तो किसान को पता नहीं था कि उर्वरक ज़्यादा डाल रहे हैं। और तो वो क्या किए कि हम लोग CVRP जैसे बने, तो हम लोग जाते थे तो किसान का समस्या सुनते थे, तो हम लोग फिर उनका खेत में गए, उनके खेत से मिट्टी लिए, मिट्टी ले आकर अपने स्मार्ट फार्म सेंटर में जो सॉइल टेस्टिंग मशीन है वहाँ हम लोग जाँच किए। जाँच करने के बाद जो रिपोर्ट हम लोग बताएं उनको कि ये तत्व आपके खेत में ज़्यादा है, जैसे नाइट्रोजन ज़्यादा है आपके खेत में और आप ज़्यादा डालते जा रहे हैं, वैसे खेत भी बर्बाद हो रहा है, मिट्टी का जो पोषक तत्व है वो भी ख़त्म हो रहा है और आपका लागत भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो वो क्या किए कि फिर हमारे जैसे रिपोर्ट के माध्यम से अब उर्वरक डालते हैं। हमारे स्मार्ट फार्म सेंटर में जैसे कि उर्वरक है तो वो तो इनऑर्गेनिक है और हम ऑर्गेनिक भी बना रहे हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और सुडोमोनास बना रहे हैं, NPK बना रहे हैं, डीकम्पोज बना रहे हैं। जो खेत में डालते हैं हम लोग तो उसमें छोटा छोटा कीट जो रहता है, कीट भी मर जाता है, पहले ही मर जाता है, जिससे हमको पेस्टिसाइड जो बाद में हम करते हैं स्प्रे वो मतलब कम करना पड़ता है। तो वो जो हम ऑर्गेनिक ये जैविक खाद से ही हम पेस्टिसाइड को ख़त्म कर देते हैं। पलाली जो हमारे खेत में पड़ी रहती है जो जलाते हैं हम लोग, वो हम लोग नहीं जलाते हैं, उसी का स्प्रे कर देते हैं, जैविक का ही स्प्रे कर दे रहे हैं, तो वो गल जा रहा है और अच्छा खाद बन जा रहा है, अच्छा खाद बन जा रहा है। तो ये सब अच्छा जानकारी मिला किसान को, जिससे किसान का लागत मतलब 50% तक का किसान का लागत कम हुआ है। हमारे 50% किसान मतलब इसका फॉलो कर रहे हैं। और कुछ किसान हैं कि यहाँ हमारे यहाँ आते हैं और यहाँ से देखकर जो ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बना रही हैं दीदियाँ, तो वो जाके अपने वहाँ भी बना रहे हैं। कम से कम 20% किसान हमारे हैं कि इस बार धान की खेती में वो बनाए हैं मतलब। और इस बार फिर मक्के का हम लोग सोइंग हो ही रहा है, तो वो मक्का जैसे थोड़ा सा बढ़ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा काम करेगा, जो जैविक हमारा है वो बहुत ज़्यादा काम करेगा उसके तना पे डालने में।
तो हम लोग को जो खाद हम लोग डालते थे उससे बचत होगा हम लोग का, और किसान को मतलब बचत अच्छा होगा, लागत कम लगेगा। तो किसान तो यही चाहते हैं कि कोई भी आए और हमका मेरा जो लागत है उसको कम करे कैसे भी करके। तो यही कहना था मैम, धन्यवाद। अभी मैं नीता जी को बुलाना चाहती हूँ जो महाराष्ट्र से आई हैं। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम नीता प्रदीप ईसर, एट पोस्ट निम्बा, तालुका मूर्तिजापुर, जिला अकोला। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। मैं नारीवंदन एपीसी में CVRP का काम करती हूँ। हमारे यहाँ पे मैं अनभरा गांव में हमारा स्मार्ट फार्म सेंटर खुला है। वहाँ पे मैं मेरे गांव में 100 फार्मर के साथ जुड़ी हुई हूँ। जो स्मार्ट फार्म सेंटर में हमें ट्रेनिंग दिया जाता है, एग्रोनॉमिस्ट बैठते हैं, वो हमें बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग इससे स्मार्ट फार्म सेंटर पे ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि माटी परीक्षण कैसा करना है, मिट्टी की जांच कैसे करनी हो, POPs के बारे में बताते हैं, और जैसे ड्रोन स्प्रे है वो कैसे चलाना है, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब ट्रेनिंग हमें वहाँ से किसानों को मिलती है। किसानों के जो कुछ समस्या रहती है उनके भी ट्रेनिंग ले जाते हैं, तो हमारे एग्रोनॉमिस्ट वहाँ पे बताते हैं। गांव में जो काम करना है CVRP को, वो हम गांव पे देते हैं। जैसे पूरे लोग नहीं आते थे तो गांव पातड़ी पर हम जैसे 10-20 लोगों का जैसा ट्रेनिंग लेते हैं, उनको वहाँ पे जैसे जो उनको लगता है वो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग में हमें बताया जाता है कि जैसे हमारा ड्रोन स्प्रे है, ड्रोन स्प्रे पहले नहीं होता था कि ये ड्रोन स्प्रे क्या है, तो किसानों को जैसे अलग से लग रहा है। पहले ज़्यादा बारिश होने से तो हम स्प्रे नहीं कर पाते थे, तो अब ड्रोन स्प्रे से जैसे बारिश भी हुई तो हम खेत में जा सकते हैं, ऊपर के ऊपर से हम ड्रोन स्प्रे कर सकते हैं। ड्रोन स्प्रे के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें जैसे ज़्यादा बारिश होने से हम नहीं जा पाते थे तो ड्रोन स्प्रे करते थे, उसको पानी भी ज़्यादा लगता था, पानी की भी बचत होती है ड्रोन स्प्रे से, समय की भी बचत होती है। जैसे ड्रोन स्प्रे में 10 लीटर पानी में हम 1 एकड़ का खेत दे सकते हैं, लेकिन जैसे वो 10 मिनट में हो जाता है। टाइम की भी बचत हो गई है, समय की भी बचत हो गई है। तो जैसे हम लेबर को साथ में लेके जाते थे तो पानी की सुविधा हमारे खेत में नहीं रहती थी, पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, तो हमको 3 लेबर लगते थे। जैसे कि जो घर से टाँकी भर के लेके जाने के लिए 1 लेबर लगता था, वहाँ पे स्प्रे करने के 1 लेबर लगता था, औषध बनाना है, जो दवाई बनानी है उसको 1 लेबर लगता था। 1 एकड़ जब खेत हमको जैसे फवारनी स्प्रे करना है तो उसको बहुत सारा खर्चा आता था। तो वो भी एक फ़ायदा है कि ड्रोन स्प्रे से हम जो कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो उससे लागत भी जैसे कम लग रही है। तो जैसे हम लेबर को पैसे भी देते थे और स्प्रे करते थे, तो स्प्रे करने में जैसे खेत में से जाते तो खेत का भी नुकसान होता था। फवारनी जैसे हमारा जो सोयाबीन क्राफ्ट उगाते हैं तो वो कहाँ गिरता था, कहाँ नहीं गिरता था, तो हमारी जो दवा है उसका भी उसमें जैसे ज़्यादा लगती थी। तो ड्रोन स्प्रे से हमको फवारनी जैसे ऊपर से छिड़काव होता है तो पूरे खेत में, पूरे क्रॉप पर उसका असर गिरता है, पूरे इसमें समान तरीके से ये बैठता है। तो उसमें हमसे 20 से 30% जैसे दवा का फ़ायदा हुआ है। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे आए हुए हैं कि ये ड्रोन स्प्रे क्या है, हमारे खेत में भी हम कर सकते हैं है क्या। तो हमने बोला कि हमारा जो डेमो प्लॉट है, 1 एकड़ का डेमो प्लॉट है, तो उसमें हम अभी दे रहे हैं, पर बाद में आप लोगों को लगता होगा तो हम आपके भी खेत में ये सुविधा दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। तो जैसे खेत में किस खेत में पानी नहीं रहता तो हम दूसरों के खेत में से पाइप लगाना बहुत हार्ड वर्किंग का काम है। यहाँ बैठने से बोलने से कुछ नहीं होता, जैसे खुद हम अपने खेत में काम करते हैं तभी मालूम गिरता है कि कितना हार्ड वर्किंग है ये। तो इस पे जैसे
पाइप लगाना है, बोरवेल से बोलो कि जैसे कुएं से बोलो, तो पाइप लगाना, लाइन की भी ये रहती है, लाइट होता है नहीं होता है, वो दिन अपना पूरा निकल जाता है, पूरा दिन निकल गया कि हमारे क्रॉप पे उसका असर गिरता है। तो ड्रोन स्प्रे से हमको बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है, जैसे इंसेक्ट, स्नेक से, जैसे हमारे जो लेबर रहते हैं उनको भी बहुत सारी हानि पहुंचती है। तो मालूम नहीं गिरता, बड़ा बड़ा जैसे क्रॉप रहता है तो उसमें चलने में, इसमें वो बहुत दिक्कतें होती है, जैसे अपने स्वास्थ्य पे भी उसका असर गिरता है। पर ड्रोन स्प्रे से हम जैसे फवारनी करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उससे वो जो लेबर है उनका भी जैसे वो ये हो जाता है, स्वास्थ्य पे भी उसका असर गिरता है। ये सब हमारे स्मार्ट फार्म सेंटर से हमें मिलता है। जैसे कि बहुत सारे हमें वहाँ पे ट्रेनिंग मिलते हैं कि जैसे माटी परीक्षण दीदी ने बताया, मिट्टी की जांच जो दीदी ने बताया वो नहीं बताऊंगी मैं, पर मिट्टी की जांच करना इतना ज़रूरी है। सबसे मेन पॉइंट वही है कि जैसे हमारे इसमें महाराष्ट्र में हम हमारे खेती को अपनी माँ बोलते हैं, जैसे माऊली बोलते हैं, क्योंकि उस पर हमारा पूरे साल का जैसे ये रहता है, पूरे साल का हमारी उस पर जैसे लागत जितनी ये होती है वो बोलते हैं। तो जैसे हमको बार बार एक उदाहरण एग्जाम्पल बोलती हूँ मैं कि जब हमको बुखार आता है तो बार बार बुखार आने से हमको डॉक्टर जो बोलते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करो, अपना ब्लड टेस्ट करने के बाद अपने को मालूम गिरता है कि हमारे इसमें जैसे पेशी कम होना, अलग अलग जैसे बीमारी रहती है तो वो ब्लड टेस्ट करने से मिलती है। वैसे ही हमारे मिट्टी का है। मिट्टी का कैसे है, जब हम मिट्टी की जांच करेंगे तो भी हमको मालूम गिरेगा कि उसमें नत्रस, पुरत, पालाश की कमतरता है कि क्या है। जैसे अब हमारे खेत में मालूम है क्या कि अब तक हम वो डाल रहे क्या आजू बाजू का ज़्यादा रासायनिक से, तो हम उससे भी बढ़ाते हैं और ये करते हैं। पहले जैसे हमारे बाप दादा करते थे, दादाजी वगैरह, तो उस वक्त जैसे माटी भुसभुसित रहती थी, मिट्टी भुसभुसित रहती थी, अब उसका वो ढेकुल तैयार हो गए, जैसे खड़े तैयार हो गए उसके, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो उसका भी ग्रोथ सुधारने के लिए, उसका भी पौध सुधारने के लिए हमें मिट्टी की जांच करना बहुत ज़रूरी है। हमको जैसे नहीं भी लगता है फर्टिलाइजर जैसे खत व्यवस्थापन मिलता है, हम मिट्टी की जांच करते हैं, तो उस हिसाब से जब हम डालेंगे तो हमारा बहुत सारा उसमें जैसे किसानों का फायदा होगा। हम जो अभी खा रहे हैं तो वो सब रासायनिक है, पर हमारा जो फोकस है प्रोजेक्ट उन्नति का कि जैसे उसमें कैसे हम रासायनिक कम और जैविक खेती कैसे करें, उसमें भी हमें बहुत सारी ट्रेनिंग मिलती है। जैविक खेती में POPs है, उसमें हमको बताया जाता है कि POPs में जो पिवड़े चिकट सापड़े हैं, येलो स्टिक बोलते हैं उसको, फेरोमोन ट्रैप्स है, पक्षी थांबे है, उससे मालूम है कि जो पहला फवारनी हमारे यहाँ पे स्प्रे करते हैं तो वो हाई डोज का देते हैं। हाई डोज से उसका कुछ काम भी नहीं रहता, फिर भी देते हैं हाई डोज का। पर हमारे इसमें घर बैठे हम येलो स्टिक कैसे बनाते हैं इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। घर बैठे उसको खर्चा नहीं आता, कम खर्चे में हम कैसे शाश्वत खेती करें। हमारा उद्देश्य है कि शाश्वत खेती कैसे करें। शाश्वत खेती का मतलब है कि जैसे कम खर्च उत्पादन ज़्यादा। तो कम खर्च ऐसा है कि हम फर्टिलाइज़र भी कम डालते हैं, उसमें पेस्टिसाइड भी कम डालते हैं, जैसे पक्षी थांबे है, पिवड़े चिकट सापड़े है, फेरोमोन ट्रैप है, वो सब लगाने से हमारा एक कम हो जाता है। फिर भी अड़ी का जैसा प्रादुर्भाव कम नहीं हुआ तो हम उसमें निम्बोड़ी अर्क का फवारनी डालते हैं। गाँव में हमारे डेमो प्लॉट लेते हैं, उसका डेमो लेते हैं, निम्बोड़ी अर्क कैसे बनाना है, दशपर्णी अर्क कैसे बनाना है, ये सब हमें हमारे स्मार्ट फार्म सेंटर में मिलता है। तो वहाँ पे हम निम्बोड़ी अर्क की फवारनी डालते हैं और दशपर्णी अर्क की फवारनी डालते हैं। हमें रासायनिक डालने का कुछ भी काम नहीं पड़ता। तो नहीं भी मरी, ज़्यादा प्रादुर्भाव हो गया उसका, तो हम जैसे हल्का सा एक स्प्रे कर सकते हैं। इतना बोल के मैं मेरा स्टॉप करती हूँ। थैंक यू। इसके बाद मैं हमारे महाराष्ट्र के स्वप्निल सातिंगे जो फार्मर है वो अपना अनुभव आपको बताएंगे, तो उनको मैं बुलाती हूँ यहाँ पे। धन्यवाद। यहाँ पे सभी उपस्थित सभी मान्यवरों को नमस्कार।
मेरा नाम स्वप्निल श्रीराम सातिंगे, मैं महाराष्ट्र से हूँ। अकोला डिस्ट्रिक्ट, तालुका मूर्तिजापुर और हाथगांव विलेज से बिलोंग करता हूँ। तो मैं एक फार्मर हूँ, स्मॉल फार्मर हूँ। तो मैं स्मार्ट फार्म सेंटर से 10 महीने पहले ही जुड़ा हूँ। तो मैं मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैं अपना जो स्मार्ट फार्म सेंटर है उससे जुड़ने से पहले जो मैं खेती करता था तो उसमें बहुत दिक्कत आती थी सर। जैसे 2024 में हमारे यहाँ लश्कर अड़ी का प्रादुर्भाव हुआ था, तो उसे हमारी जो फसल थी वो ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो स्प्रे कर नहीं पाए। तो कैसा हुआ, हमारी फसल नष्ट हो गई, जो लश्कर अड़ी ने पूरी खलास कर दी। तो अभी 2025 में तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा फसल भी हुई, पर जैसे स्मार्ट फार्म सेंटर से हमने ड्रोन की मदद से स्प्रेइंग की तो हमारी फसल बच गई। तो अगर हमारे पास 2024 में भी ऐसा ड्रोन का स्प्रे होता था तो हमारा फसल वहाँ पे भी बच सकता था, पर नहीं बच सका। पर 2025 में हमारा फार्म बचा है। तो जैसे हम स्मार्ट फार्म सेंटर में जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फार्मर हमारे जो साथी फार्मर्स हैं उनको भी लेके जाते हैं, उनसे भी ट्रेनिंग करते हैं। तो हमारी जो स्टार्टिंग से हमने जो किया है, तो हमारे सॉइल टेस्ट नहीं की थी, तो हमें पता नहीं था हमारे खेत में क्या न्यूट्रिशंस है और क्या नहीं। तो जैसे हमारे स्मार्ट फार्म सेंटर से हमारी सॉइल टेस्टिंग की जांच हुई तो हमारे यहाँ पे हमें पता चला कि हमारे खेत में ऑलरेडी नाइट्रोजन का प्रमाण ज़्यादा है। तो वो फ़ायदा हमारा हुआ कि वहाँ पे हमारा नाइट्रोजन का जो कॉस्ट थी वो बच गई, उसमें हमारा वो लागत खर्च जो था वो बच गया। और जो न्यूट्रिशन लगता है वो हमारे यहाँ पे जो CVRP दीदी है उन्होंने भी बताया, एग्रोनॉमिक्स जो है उन्होंने बताया कि आपको सर इतना डालने की ज़रूरत नहीं है, जितना लगता वही डालिए। इससे क्या होता था सर हमारे यहाँ पे, तो ओवरडोज जो होता था न्यूट्रिशंस का वो भी हमारा बच गया। उससे हमारा जो खेत का जो नुकसान होता था वो भी नुकसान होने से हमारा खेत बच गया। और दीदी जो ट्रेनिंग में हमें बताया था कि BBF पद्धति से कैसे बुआई करना है, तो हमें इससे पहले मालूम नहीं था, माहिती नहीं थी उसकी कि कैसे BBF पद्धति से पेरना पड़ता है। तो जैसे हमें हमारा प्लॉट स्मार्ट फार्म सेंटर के माध्यम से, आर्या के माध्यम से हमने पेरनी की, इस साल का अनुभव बताता हूँ मैं। अगले साल तो सर हमारे खेत में, वही खेत में ज़्यादा ईल्ड नहीं हो सका। तो इस साल का हमारा रिकॉर्ड ब्रेक वहाँ के भाग में ईल्ड हुआ है सर। सोयाबीन का हमें PDKV अम्बा, हमारी यहाँ पे जो विद्यापीठ है पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, वहाँ से सर हमें PDKV अम्बा स्मार्ट फार्म सेंटर से इन्फॉर्मेशन दिया था कि ये वेराइटी आप लगाओ। हमने सर लगाई, तो उससे हमें हमारे यहाँ के अभी इस साल के जो फार्मर्स हैं उन्होंने उनके तरीके से फार्म किया है, तो उनको सर 4 क्विंटल से ऊपर यील्ड नहीं हुआ। हमें 9.5 क्विंटल 1 एकड़ में यील्ड हुआ है सर PDKV अम्बा का। और हमारे पास अभी भी है, अवेलेबल है, वो जो हमने निकाला वो सर दीदी लोगों को, सर लोगों को हमने बताया कि सर इस टेक्निक से हमें यील्ड बढ़ा है, यील्ड भी बढ़ा है। और हमें जो ट्रेनिंग मिली है, ट्रेनिंग में मिला है, बताया गया है कि बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ कैसा करना है। जैसे हमने गांडूल खाद जो बोलते हैं, केचुए का जो खाद बोलते हैं, वो भी हमने बनाया, कंपोस्टिंग भी किया, निम्बूड़ी अर्क तैयार किया, दशपर्णी अर्क तैयार किया। उसके बाद हमने वेस्ट डिकम्पोजर का भी हमारे खेत में यूज़ किया, तो उससे भी हमारा बहुत फ़ायदा हुआ। सॉइल टेस्टिंग से भी बहुत अच्छा हमें मालूम पड़ा कि हमारे खेत में क्या न्यूट्रिशन है क्या नहीं। सभी ये यील्ड निकलने के बाद जो स्मार्ट फार्म सेंटर से हमें बताया गया कि आपका जो सोयाबीन अभी निकला है, तो ये आप अगर लोकल APMC में अगर बेचेंगे तो आपको वहाँ पे जाकर वो मंडी में लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे दिन भर बैठना पड़ेगा, और वो ढीगर लगा के वहाँ पे हमारा वेस्टेज भी चला जाता है। सोयाबीन कम से कम 10 किलो का हमारा वहाँ पे भी लॉस होता है, 1% वहाँ पे कटौती भी हो जाती है। तो हमें बताया है कि ADM के साथ टाइप हुआ है कंपनी का। तो महाराष्ट्र में जैसे अकोला डिस्ट्रिक्ट में ADM नहीं था सर, तो ADM की हमारे यहाँ पे जो खुशी मैडम आई, उन्होंने ADM से बात की और हमारे यहाँ पे मूर्तिजापुर में खरीदी सेंटर स्टार्ट कर दिया।
तो ऐसा हुआ सर कि हमारा मार्केट में जाना वो दिन चला जाता था, 1% भी कटता था। यहाँ पे हमारा 1% भी न कटते हुए एडीएम से हाईएस्ट रेट से हमारा माल भी परचेस किया गया। तो इसे हमारा वो फ़ायदा हुआ कि हमारे माल को अच्छे से रेट मिल गया, नहीं तो फिर मार्केट में जो बोली लगाए थे 3500, 3200, 3300 यही रेट से हमें बेचना पड़ता। आज हमारा सोयाबीन का क्रॉप जो है 4500, 600 रुपये से डिमांड कर रहे हैं सर। और हमने जो अभी तक जो डेवलपमेंट की है स्मार्ट फार्म सेंटर के माध्यम से, तो उससे क्या हुआ, हमारा ईल्ड तो बड़ा ही है पर क्वालिटी में भी फ़र्क गिरा है सर। जैसे सोयाबीन जो है ना, सोयाबीन हमारे यहाँ बारीक दाना होता था, तो उसे दाने की जो साइज़ है वो बढ़ गई, कलर बढ़ गया, क्योंकि हमने जो पहले हमारा जो रासायनिक खेती हम करते थे तो उससे तो हमारा कॉस्ट बढ़ ही जाता था, वो कॉस्ट भी हमारा कम हुआ और ईल्ड भी बढ़ा। तो इस तरह से हमें बहुत सा स्मार्ट फार्म सेंटर से फ़ायदा हुआ है। बोलने के लिए बहुत है, टाइम बहुत कम दिया है। आर्या को मैं एक थैंक्स करना चाहता हूँ कि मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं एक फार्मर होकर भी आपने यहाँ तक मुझे बुलाया और बोलने का 2 शब्द बोलने का एक चांस दिया, इसके लिए आर्या का और सभी मान्यवरों का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल जी। there are, these are not supposed to be anecdotes. These are stories which really motivate us, and we really feel that we really don't know how this will move, what will happen, but these are certain green shoots that really motivate us. It tells us that these are difficult problems, but there are simple solutions that can probably solve these difficult problems. And if we are able to put this together with partners, with the community, probably there is a solution. And that is where I think this entire effort is. And that is what I wanted to just conclude my sort of discourse or discussion with this. और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी दूर से आए और आपने अपना ये जो एक्सपीरियंस है वो आप हमारे साथ आपने बांटा, और आपका जो ये अनुभव रहा है वो हम सबको बहुत ज़्यादा सशक्त करता है और हमको बहुत मोटिवेट करता है कि हम कुछ ऐसा और कर सकें। हमें नहीं पता कि वो कितना आगे बढ़ेगा, बट हमें ज़रूर ये पता है कि अगर ये 4-5 स्टेट में चल रहा है, 17 जगह चल रहा है, तो और भी जगह चल सकता है। और इसीलिए आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक ऑल दी एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ द प्रेस एंड द मीडिया। दिस इज़ नॉट अबाउट अ लॉन्च, दिस इज़ नॉट अबाउट us coming in and declaring something. This is primarily, and the objective of this exercise, of this interaction, is to share these learnings, that at small levels, with a collaboration and a participative approach, we can probably attempt solving some of these bigger problems in Indian agriculture. So I think that is where I would like to sort of conclude my discussions here. As we move forward, I think as an organization, हमारा एक ध्येय है, हमारा एक उद्देश्य है जिस पे हम काम कर रहे हैं। मैं अपने कॉलीग शेनॉय जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आके एक बार जो हमारा ऑब्जेक्टिव है और हम क्या करना चाहते हैं आगे को, उसके बारे में कुछ हमें बताएं, एंड देन वी विल सॉर्ट ऑफ जस्ट मूव इनटू क्वेश्चंस एंड आंसर्स विदाउट प्रोलॉन्गिंग दिस फर्दर। थैंक यू वेरी मच। सबको मेरा नमस्कार। ये सब करना थोड़ा आसान है, हमारे लिए हिंदी में बात करना मुश्किल बन जाता है, लेकिन हमारे किसान भाइयों इधर है तो मैं कोशिश ये करूँगा कि ज़्यादा हिंदी में ही बात करें। जब हम सुबह इधर आए तो हमारा जो 5 कोलैबोरेशन पार्टनर्स है वो अपने अपना स्टाल सेट कर रहे थे। तो हमारी मन में 12 साल पहले हमारी जर्नी याद आ रहा था, जब हम आर्या की शुरुआत किए थे। ऐसे ही हम लोग मतलब जो इनिशियल थे, तो भगवान की कृपा से और हमारा जो को-फाउंडर्स है उनका विज़न, उनका मेंटरिंग और उनका बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम आज इसी स्टेज पे खड़ा होकर बात कर पा रहा है। तो जब आज भारत की सबसे
आगे हुआ एक अग्री टेक होने की उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास रहता है कि हम इस इकोसिस्टम को और कैसे इनेबल कर सकता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि आप काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया अखबार में लिखे जाते हैं कि स्टार्टअप के बारे में काफ़ी अच्छा चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि ये क्रिकेट टीम की मामला बनता है, जो दिखता है 11 लोगों को, लेकिन इसके पीछे लाखों लोग होता है जो पहुंच नहीं पाता है। तो कभी कभी स्टार्टअप का, एग्री टेक स्टार्टअप का कहानी भी यही हो जाता है। तो इस इकोसिस्टम में हम कैसे इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं और नौजवान लोगों, क्योंकि यूथ ऑफ द कंट्री इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन एग्रीकल्चर, इनको और आगे कैसे लेके आ सकता है। तो उसकी एक विद दैट ऑब्जेक्टिव वी डिसाइडेड टू पार्टनर विथ ऑल द स्टार्टअप्स व्हाट यू फाइंड हियर। So before I introduce them, I just wanted to take maybe 1 minute on our thoughts about it. क्योंकि जब पहले शायद आन से ये कॉल आया था या हमारी कम्युनिकेशन टीम से आपको इन्फॉर्मेशन दिया देख के मीडिया कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो आपके मन में भी ये सोच आया होगा। हमने काफ़ी बार ये सुना है, काफ़ी लोग ये कोशिश भी किए हैं, लेकिन स्केल मॉडल पे काफ़ी कम एग्जाम्पल्स है इंडिया में। तो हम इसके लिए ये सब लॉन्च करने से पहले एक 3 साल स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस किया कि ये क्यों स्केल नहीं कर पा रहा है। हमारा हर बिज़नेस का एक पीछे होता है कि हमारा एक बिज़नेस में एक सिस्टमिक डेफिशिएंसी को एड्रेस कर रहा है। जो हमारा वेयरहाउसिंग है फार्म गेट लेवल स्टोरेज का, हमारी फाइनेंस है फाइनेंशियल इंक्लूशन का, हमारी आर्या टेक है कि कॉमर्स मॉडल जैसे मार्केट को फार्म गेट पे लेके जाए। तो हम उस एंगल से इसको सोचने लगा कि इस जो सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेसिलेंट फार्मिंग को कैसे हम एक मार्केट लेड मॉडल कैसे बना सकता है। आज की तारीख में ऐसा नहीं, आप देखा होगा कि बहुत ही पैशनेट किसान लोग हैं, महिला किसान लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो अपनी जर्नी के बारे में आपके साथ शेयर कर रहा था एक्सपीरियंस। ऐसी बहुत हज़ारों लाखों किसान हमारे देश में है जो इंटरेस्टेड है, लेकिन समस्या कहाँ आता है, हम जैसे लोग हैं कभी कभी इसको मतलब हम मैं बोल रहा कि कंज्यूमर एंड से, आर्या नहीं, ये कंज्यूमर एंड से इनका एफर्ट को पेमेंट करने में उधर एक चैलेंज आता है। हर लोग पेमेंट करने में रेडी नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पेमेंट करने के लिए रेडी है। तो हमारी एक सोच ये था कि ऐसा एक मॉडल इसको तय करे कि somebody is willing to pay for the effort of this farmer, extra effort and the interest towards nature and agriculture। अगर वो एक सिस्टम, ये एक मॉडल हम तैयार कर दिए, एक मार्केट लेड मॉडल, जैसे प्रसन्ना अभी उसको एक्सप्लेन कर रहा था, तो ये स्केल लेवल पे इंडिया में बहुत आगे हम कर सकता है। 3 साल पहले जब वो डिस्कशन हम स्टार्ट किए थे, हमारी बायर इकोसिस्टम है, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि परमिशंस की ज़रूरत पड़ता है कॉर्पोरेट का नाम लेने के लिए। तो हमें उम्मीद इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आगे जाके पिछले 2-3 मैं बोलूँगा 6 महीने में जो प्रोग्रेस हमें आगे मिला है, जो सपोर्ट उनसे मिला है बायर इकोसिस्टम से, तो क्लाइमेट रिसिलेंट और सस्टेनेबल फार्मिंग में एक बिज़नेस मॉडल बन सकता है करके हमें भी कॉन्फिडेंस आया है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सब एक हमारा एक मार्केट लेड मॉडल हम सस्टेनेबल और क्लाइमेट रिसिलेंट एग्रीकल्चर के लिए जो तैयार कर रहा है, उसका हम बोलूँगा कि शुरुआत नहीं है, कुछ और काम हो रखा है, बट दिस इज़ ए कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्शन दैट यू आर सीइंग हियर फ्रॉम द फार्मर्स एंड द मीडिया, फ्रॉम द कोलैबोरेटर्स। आज हम सोचे थे कि स्टेज हम किसान के लिए छोड़ देंगे, हम कम बात करेंगे, तो ये था कि इसकी कंसेप्ट का क्लैरिटी के लिए प्रसन्ना 10 मिनट लिए है। तो मेरा ये था कि आर्या के अलावा इस जर्नी में कोलैबोरेशन पार्टनर्स है, हम उनको एक इंट्रोडक्शन कर दे। हम ये सोचे कि उनके साथ जो काम हो रहा है, उनका एक एक कंपनी की जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है, CVRP दीदियों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसकी ज़रूरत नहीं, फिर भी एज ए रिकग्निशन एंड रेस्पेक्ट मैं चाहता हूँ कि हमारा इस जर्नी में जो शामिल हुआ, जो कोलैबोरेशन पार्टनर्स है, उनका एक इंट्रोडक्शन करें। माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टनर्स इज़ व्हेन आई टॉक अबाउट यू, काइंडली स्टैंड अप, and then rest of the floor we wish to leave it to the media so that we need time to answer questions and everything. And kindly, you have a folder with you, in that you have a bio of all the collaboration partners and the farmers also. So we wish to that when you ask things, you can that for that purpose I'm just a formal introduction I'm giving to you about the collaboration partners. जो farmers अपने introduction they have already given it.
We have from BharatRohan here, Mr. Amandeep Panwar. He's an aeronautical engineer. And Mr. Amandeep, I would request, and Pragati, both of you, they are here. Pragati is here. Amandeep, I think he has stepped out for a call or something. Thank you, Pragati, for coming in. The women representative of the Agri startup ecosystem, I will say like that. Pragati heads the strategy and business at BharatRohan. और एक अच्छी चीज़ है कि अभी हमारा जो 5 कोलैबोरेटर्स आप इधर देख रहे हैं उसी में से एक लिस्टेड कोलैबोरेटर भी है, लिस्टेड पार्टनर भी है BharatRohan. थैंक यू प्रगति फॉर योर सपोर्ट एंड वी विश टू सी अमनदीप as well the journey taking forward. Thank you very much. Again, we have a very another passionate engineer with us who has engineer turned entrepreneur and working with the soil technology. So we have here Satyendra Gupta from Neoperk. Thank you, Satyendra. So thank you for your support, and you have heard from the Maharashtra people that soil is God, and you are certainly working to ensure that the regenerative practices keep continuing. Thank you very much for the partnership. जब हम सोच रहे थे कि किन किन पार्टनर से कोलैबोरेट करना है, तो हमारी सोच था कि कुछ हमारा जो टीम है वो बोले कि एक क्लाइमेट पार्टनर भी, एक वेदर एडवाइजरी भी चाहिए. हम सोचे थे दूरदर्शन से चल रहे, रेडियो से चल रहे, अखबार में भी आते, फिर इसकी क्या व्हाट इज़ दी बिकॉज हमारा ये था ना कि जो भी हम इसमें सर्विस दे रहे फार्मर को उसका एक एडवांटेज होना चाहिए. तो वैसे एक टाइम में हम मथुरा जा रहा था और कुछ वीट किसानों से बात कर रहा था, तभी हमें पता चला इसकी कितना इम्पोर्टेंस है. क्योंकि वीट क्रॉप में एक नॉक्शियस वीड आता है, फिलारिस माइनर, मामा बोलता है कई जगह. दिस पर्टिकुलर वीड इज़ वेरी रेसिस्टेंट टू हेर्बिसाइड्स नाउ. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, एंड दैट्स द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल रीजन फॉर द वीट yield decrease in many places. And for the herbicide to work, sunlight is an essential part because it works through the photosynthesis. So you know that during the wheat crop season you have cloudy weather. अगला कल का दिन क्लाउडी हो गया तो मैं जो हेर्बिसाइड का स्प्रे करेगा वो काम अच्छे से नहीं करेगा, सो फिर दोबारा स्प्रे करना पड़ता है. सो अगर जब उसको पता चलता है कि अगर कल क्लाउडी वेदर का 50% का भी चांस है, मैं एक दिन और पोस्टपोन कर सकता हूँ हेर्बिसाइड स्प्रे का. तो मैं जो उनसे किसान से सुना ये दिस पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस ऑफ दैट requirement, that is when we realize the importance of the climate, and then the farmers have spoken about it. We have here Shriyog Nolvar from Fyllo, the founding member team from Fyllo. These are all the thank you, Shriyog. These are all the representatives of young and vibrant agri-tech ecosystem who is going through a lot of challenges as well as the abundant opportunity that this country is opening to them. Thank you very much for coming here. Then we have again here, when things fail, what we do is what we go to the insurance persons, right? We have again another here started by three Irmans. They started this startup, Finhat, and they have a specialized package for the climate parametric weather insurance. So these people are collaborating with us at the smart farm centers, piloting on the climate and parametric weather insurance model for the farmers. Sandeep Shukla from Finhat is here. He is also from IRMA, and it's not easy to join the startup. Being from those premier institute, I know they always have multiple opportunities, but taking the journey of startup from the start of the career is something which to be appreciated. Thank you for partnering with us. We look forward to your continued association with us. And then with all these things, we have heard an important aspect is package of practices. What is the SOP for farming? That's SOP for farming. And with each package of practices, it comes out after years and years of testing at university and consultation with experts. But we don't have time for that because climate and sustainable agriculture is something within the last 3-4 years. So we need a partner who will talk to all the people, with all the experts, the कृषि विज्ञान केंद्र, the university experts, and this is very localized because एक जिला में जो काम होता है दूसरा जिले में काम नहीं होता है. So we have here Maharshi Dave from FarmBridge. He is also taken a major challenge. जब हम बात करेंगे ना कि somebody will pay for farm advisory, या जाके कहीं भी बात करेगा तो people will tell हाँ हम बहुत लोग देखे आके बात करते हैं, फार्म एडवाइजरी के लिए पे करेगा. इस देश में एडवाइजरी के लिए, फार्म एडवाइजरी के लिए एक पैसा लेना बहुत डिफिकल्ट है. बट महर्षि इज़ प्रूविंग इट अदरवाइज,
He is making a change through the package of practice for the farmer, and people are willing to pay for his service. He is the person, his institution, FarmBridge, is associated with us at all the smart farm centers in developing the local specific package of practices. Thank you, Maharshi, for your presence here. Finally, to the media people who have come for this occasion here, rest of the time the floor is open for you for your questions and answers, because all these things as Prasanna mentioned here, these are all, I wouldn't say experiments, but scaled attempts at solving a problem. And often it is these questions and these things which clarify us further. And also, when a lot of things are done in many parts of the country, you are the vehicle and the medium which actually transmits this across. As Prasanna said, today is not that we are declaring something or making it open or inaugurating something. It's more about sharing our experience, and then maybe your effort and partnership, how can we take it forward and make it vibrant, successful for our country. Thank you very much, all the people here. Thank you very much. Yeah, myself Lakshmi from PTA. I just want to know that this infrastructure, the farm centers, is it owned by the infrastructure? If it is a room or if it is set up, is it owned by the FPOs which are attached, or is the Arya setting up and then the other partners are displaying their products? So I just want one. And the CRVPs, are they paid? Are they on a salary mode? And the third one is, 17 centers you said, so far set up, in which states, and what kind of crops these FPOs grow, and how are they attached with buyers? Thank you, Lakshmi. There are three questions which has come up. The ownership of the smart farm centers. Second is, what is the remuneration for the CVRPs? Yeah. And the third was, which are the states in which the 17 centers are coming up? And the crops. So maybe, sorry? The places, yeah. Places in the states outside Maharashtra. Okay, yeah, sure. So I understood that as well. First, about the smart farm centers, the physical structure of that is, once at this point in time, what we are doing is Arya is setting it up, because it's the physical structure. Now, when you ask about it, I also would like to clarify, Lakshmi, one thing. This is not, we started, that physical piece is not something we are just starting now. That physical piece was there years before there, when we were, those were like, many places in the country, we run procurement center for the FPOs, where quality and grading trainings were done for the farmers. Capacity building programs were running there. So the physical place is there from the initial journey itself. What we have seen is, like in the past 3-4 years, when we saw that this climate and sustainable became important, is when the tech is coming over that. When we call it as now, it is the smart farm centers. So the physical space is, as of now, it is operated by Arya, but we don't see necessarily like that going forward. We will also be welcoming if FPOs will set up. We are seeing interest from development actors who are willing to come and say that we will set up these things and help us to do that. There are governments who are discussing with us, how do you see this can be extrapolated? So at this point in time, I say 17 once we set up the physical structure. So these are flexible, like going forward, we are looking for different ways and means of operating it. Now about the CVRPs, this actually is another one program which started almost a decade ago, supported by the UNDP. At that point in time, this was called as Women Sourcing Managers. So this came from an idea of, making gender inclusion and feminizing the agriculture value chains. That's how the concept was. It developed from that. And we found that in our journey and success of these farmer producer organizations who are working with us, they played a very important role. Now, coming to, when we're looking at it, how can we make them entrepreneurs? It was something which was we have been always iterating that. We have done at multiple forums, represented to the government. We worked with this Skill Council of India in certifying them on multiple things so that we make them employable, either with Arya, with our partners or outside. Now, coming to smart farm centers, we saw an opportunity for them that there is an opportunity for them to
have a remuneration-based activity there. So now what we see is like we see when it is going forward, when it is scaling up, there's opportunities which will come at us, a soil testing person, a drone Didi, a Didi who will go and speak about the package of practices, a Didi who will be, disbursing the instruments, insurance, right? So this is what the opportunity we see. Now, if you tell them that, okay, tomorrow this opportunity will come, so you start working with us, now is not a model which will work, right? So at this point in time, we have started with like a small amount of an honorarium for them. That's how we have started. But going forward, what we see is the entrepreneurship kicking in there as and when this idea is scaling up. And the states in which we are operating is, apart from Maharashtra, we are in Jharkhand. We are operating it in Gujarat, we are operating it in Bihar, and we will be soon setting it up in Punjab and Uttar Pradesh. These are the other 2 states soon we will be opening it up. And crops? So the crops in Bihar it is on corn and paddy. In Maharashtra it is on soybean primarily, but on lentil as well. In Gujarat, it is on again the rice plus cotton is there as well. The activities have started with cotton also. And in Jharkhand, it is again on primarily on rice plus a bit of a corn as well. And in Punjab, it is again on wheat and subsequently followed by rice. I think I covered all the states where we are. Yeah. Okay. And in the second phase. Okay, the specific places in Gujarat, I think I will have to take the help of my team members to the specific names. Shoaib, if you can exact. In Gujarat, we are covering in Vadodara and Nadiad. In Gujarat, we are operating in Vadodara. State-wise locations. हाँ sir, state-wise. Gujarat, we are in Vadodara and Nadiad in Gujarat. Bihar, we are in Simanchal in like 3 to 4 districts, Kishanganj, Purnia, Kathiar, Araria and Bhagalpur, some part of Bhagalpur. So we are covering Simanchal belt over there. Next, Jharkhand. Jharkhand, we are majorly active in Khoti, nearby Ranchi. So we are actively active in Khoti region, sir. In Punjab, it is in Ropar, which we will be. We initiated in Ropar, Punjab, and in UP, we are covering 6 districts as of now, like Banaras, Chandauli, Prayagraj, and Mathura, Aligarh. So we are covering 6 districts in UP, sir. Yes, sir. Please. Yeah, sure. Yes. Yeah, please. Can you tell us the names of some Samaritans, the corporate houses who are in your program? Sir, what I will do is, more important than that, because specific names I am not allowed to speak, but I will tell you the segments in which they are coming us from. I hope that it should clarify. There are corporates who are coming us and partnering with us for water efficient rice, because the rice exports which is going to some countries, it fetches a better price when it is water efficient. There are corporates who are partnering with us, where they are partnering with us for heavy metal free cereals, because in the sensitive products that they make, for especially for nutraceuticals and again baby food, it's extremely important that the cereals going into it has to be heavy metal free. So residue free cereals is a set of corporates who are partnering with us. There are sugarcane people who are with us, because there is a mandatory requirement for them to take the agronomy trainings in their catchment area, and they see the smart farm center, they are quite impressed that everything is integrated at one place. And then there are spices export people who are with us, already the agreement signed and operations going on, where they are looking at residue free spice for exports. So this is the specific segments in which these people are coming from. For sensitive reasons with them, I am not allowed to speak about the particular name of those corporates. I think that should be okay. I just want to know the tools and services which are offered at the farm centers. Well, you said it's provided at free of cost, right?
For like the for farmer. example, for farmer. For farmer, yes. Like soil testing, there is a price. For farmer, correct, yeah. And for drone? Drone also, it's all the services right now you see, let me clarify that, Lakshmi, is what we envisage is, because as the earlier workshops and the stakeholder consultations that we did, we saw that some of those earlier initiatives did not take off because they were all centering on the farmer will pay type of a thought. The challenge for farmer paying was like, somebody was not paying him back. So in our model, what we are looking at is, we are not collecting the fee from the farmer, but it is paid to us from the corporate side. And then coming to specific areas where corporate is not there, where it is also coming is the Development Act is coming forward saying that we would like to operate these things in these areas, where their focus is on the climate and sustainable goals. So we have to deliver them those impact metrics there. But they are the people who are paying for these operations. That's how it is. So how will the partners benefit in this? From the payment, what the buyer has given, from there the share will be shared between the partners? Correct. So each of those partners with us, we have a commercial agreement with them. That's how we are looking at it. Actually not the farmer paying it, it's the buyer paying it for the service. Benefited in terms of saving his cost because otherwise he would have incurred. But the partners, you roped in 5 partners. Yeah. They themselves are yet to stand up on their legs. Yeah. Why would they? Got it. No, I think the part. I think let's they are maybe getting here. paid, right? How will they benefit? There Okay. Satyendra, I think you can share your experience. Sure. Yep. So I am Satyendra from Neoperk. So we as an agri-tech are solely focused on the problem of soil testing. The reason being it's a very hard problem and it took us a lot of time to solve this problem first. Whenever I take this solution directly to a farmer, an individual farmer, while he is ready to adopt it, right, what he struggles with is after soil test, right, can you also help me get to the market, right? A farmer has 10 problems. While he understands soil is degrading, right, he has other bigger problems, right? Where will I sell my produce? So there are those issues. So that is why I can't directly go to the farmer, right? Because I'm not solving his biggest pain point. That was one. Second is the technology solution that we built, right? It's a beautiful solution. I've kept it for demo, right? Our device can test 100 samples in a single day. It can test more than 1,000 samples in 10-15 days, right? The value prop was large-scale soil testing. And we never did free soil testing before this project. We were very focused, farmers should pay for soil testing. But the challenge was, how do you get so many farmers to pay at one place, right? And we set up local testing units. Our device is very portable. You can take it anywhere, set it up there, and farmers bring in their samples, test it, and then give you the reports the next day. How do you get such an aggregated demand, right, at one place? That was a challenge for us, and we shifted to a B2B model. So we do work with several partners for this, right? But Arya, right? They are offering it free. I have slightly contrarian perspective on that. I feel farmers should pay at least some amount so that they take it more seriously. But otherwise, what this model is doing is they are getting us aggregated demand for startups like us, right? And Lakshmi's question is to answer that Arya is paying you. Yeah, Arya is paying us. No, actually, that's what I was saying in the beginning. As far as the service providers are concerned, all the service providers are getting their commercial values, right? Somebody else is paying. For example, I require certain X amount of wheat. I am willing to pay a little bit more, and from that I am actually paying it out. So the model is entirely turned around model, right? Earlier, all the models which were set up was the user was paying. Here, actually, we are trying to build a model where actually market players who are going to procure are paying for the services. So all the service providers aggregated are not doing anything free. They are getting their commercials, maybe at a discounted price than at the retail one, because there is an aggregated demand which is happening. So the beauty of this model, if it succeeds, right, it's now 17. So as Prasanna said, we want to see it as 250, 300, wherever it is there. So somebody is willing to pay for the package of practices which are getting adopted in a certain manner by use of technology. So there is a higher premium which the person is getting because of the package of practices. So he is willing to shed a part of that premium to the procurement, right? That is through Arya. So that is getting paid. So all the service providers are commercially getting their due. So it's not free. So just farmer is getting free. Just want to add one thing here, that
in our experience, we saw that this is basically an initiation problem. Somebody has to make a beginning. Either there are startups who will come out and say, as long as farmer pays me, I will offer that service. Now farmers are not willing to pay. Now the service will not start. So our thought as of now is that there are people who are willing to pay. Let us start 200 centers where the farmer is not having to pay, but at the end of the season, the farmer is seeing that benefit. For example, our own experience, when we started our own financing to farmers, we saw that FPOs in the beginning were unwilling to borrow, even though they had a need. Now you had to initiate. So we went and spoke to banks. I'll not name the banks. They partnered and they offered the best rates for those loans. The FPOs participated. After a year, the FPOs saw that they earned at least around 15 to 40% more than what they actually did. In 2 seasons, FPOs started paying. Now the point is that if nobody takes the initiative to demonstrate this, things will never start off. The way we solved for this was we identified that there are buyers, there are other development actors who are willing to support in this because they are benefiting in their own ways. Nobody is doing it free because there's no free lunch. Because as I was telling you, the corporate, if I were to see each of these examples, each corporate is having to bear an expense of anywhere between 0.75 to 2% as an additional expense if they were to do this activity in a certain catchment. Now that 2% gives them an output which allows them to earn about 20%. So for them, they are getting their economic benefit. They need a layer of trust, which Arya is coming in and saying, you need 800 tons of wheat with no metal residue. We will make sure that it will be available to you because we are working with 2,000 farmer producer organizations who can do it. But to be able to do that, there is an investment which is needed. We stick our neck out to say, we will get you 8,000 tons. And that is where the CVRPs come into the picture because the community is a part of this whole initiative. So our thought is that as we do today, each of the entities, as I said, it has to be a win-win. Each partner, none of the partners, even though all our hearts bleed for rural India, we cannot do it at the cost of our business. So even Arya, for example, when we are putting in this effort, what is it that we are gaining? We are gaining because that same corporate who has been working with us, when they procure through us, our volumes with them go up. Our loans to the FPOs that we work with, they go up when more members join them. So it is an investment that we are making. Financially, we have been fortunate that we are not being forced to make any financial investment in this. But a lot of effort goes in. And that effort is basically that is being compensated by the potential increase in our business as well. Yeah, my next 2-3 questions are there. One is how many more farm centers, smart centers you plan to set up, and what is the final target that you want to achieve? And the second is the partnership with 5 startups that you have for how many years? Like suppose tomorrow someone else develops some new technology, you plan to rope in them, or someone wants to withdraw from the, so how does it work like? At Arya, we define our business as we will offer the freedom of choice to the farmer to be able to decide when to sell and whom to sell to. The whole idea is about choice. So all of the partners, I mean, all of you are here, you can also sort of speak for yourself. There is nothing binding for anybody. If they see value, they will be with us. CVRPs, farmers, if they see value, they will be with us. Corporates, if they see value, they will be with us. So this is completely flexible. As I said, when we started, we did not have insurance as an embedded piece in the whole ecosystem. But today, insurance is. Tomorrow, there is something new, some new technology that comes in which is important and for which there is value, where the stakeholders see value. As a buyer, the buyer sees value, and as a farmer, they see value. It is something which will automatically come in. The way we see this is, if we look at it as a philanthropic initiative, it is not going to scale.
It is a business initiative. Volumes pick up, then all players will come in. Volumes pick up, buyers will also be interested because they can get what they want. Volumes pick up, farmers will earn more, and hence our business will also go up. So we are very clear that this is not a philanthropic initiative. We may use philanthropic resources, for example, to set up a smart farm center. We are completely open to come out and say, if there is a CSR which is willing to do this in their catchment, we are more than happy to support that. But our idea is that this works. The reason why in the last 10 months we have been able to increase this from one smart farm center, which started as a philanthropic initiative by somebody who said, can you do this for us, to 17 which are now working on a commercially viable manner, is because there is some business value to it. So which is where we see it. Our thought is that everybody is absolutely free to take their decision. If any of our partners do not make money, they will not be there with us. So that is how we see it. That is how we have done business always. And what's the target? So in terms of target, as of now, our thought is that by the end of this financial year, we are looking at increasing this to about 25 smart farm centers. And Shinoy, you better make that commitment. Difficult. Saying a number is something always like, and it can be either overwhelming or underwhelming in the agri-tech, right? But in this case, what has happened is when we started one, it was something like a test thing to where we reached 17. And to see what we see is like 25 by March. We initially thought we should set up 100 in 3 years. But as and when the things are opening up and the corporates more are coming in, this number can be above that. I think to make it a reasonable one, while, see, these are not business target numbers, but I think to get a reasonable impact, a number of 200 to 250 is what we anticipate to do in 1.5 to 2 years. 1.5 to 2 years. 250. 300 was reasonable. Yeah, that was a big number we thought. 100 is very big we thought. No, but because see, when we started, as Shanoy said, it was started as a small initiative. But it looks like the interest is growing. So, and when the interest is growing and the user is made free, right? And nobody is actually losing money in the entire context, and it's commercially viable. We feel that the growth might be not arithmetic, it will be geometric. So it's just an assumption, so it's not a fixed number because ultimately everything has to be tied up. So this will be mostly non-perishable commodities? As of now, yes, madam. As of now, as an organization, we operate in non-perishable, so we will continue with our strategy at this point of time. Yeah, please, madam. Yeah, sure. What kind of turnover Arya is expecting by end of this fiscal? This is something I will leave to Prasanna to answer. We've seen business sort of growing. We've seen the profits also increasing. This year, as compared to last year, we're looking at about 30 to 35% kind of a growth in our revenues. And as profits, we have always, if you see our numbers past 4 or 5 years, we've always doubled our profits. So we believe that this year too we will follow the same trajectory. Okay. And how much was the turnover last year? About 450 crores, which was the net turnover or net revenue that we and the profit? Profit was about 35 crores last year. This is PAT, right? PAT, yes. We talk in PAT, not in a big PAT. Just No, many people talk, you know. Yeah, yes. All cost. Yeah, thank you. Anyone else who would have Also a to question? our partners here who are from the startup ecosystem, pertaining to their business or maybe about this agri-tech startups journey, whatever you would like to ask as well. I have one question. So I wanted to ask that you have 5 partners on board. In future, do you have in mind that you want to expand the number of these partners when you're expanding to newer geographies, or you will continue on working with these only?
I also would like to, And just I'll add on to my question also. So you have partners who are in the tech domain. There are other domains also that can be helpful to the farmers and the farmer producer companies and the buyers whom you are targeting to pay for these services. So are partners from other domains also welcome to be a part and collaborate with Arya on this? Yeah, I would like to answer. Yeah. Hello everyone. My name is Maharshi and I'm representing FarmBridge Social Support Foundation. The partners in this project of smart farm centers, ourselves, we are not into the tech domain. We don't manufacture anything. We don't sell anything. But the main skill set of our team is to inflict a behavioral change in the agriculture community, because we understand it has been a privilege since last 10 years. We have been working in 9 states. We have seen different soil types. We have seen different climatic conditions, different temperatures, and different mindset of the farmers also, depending on the culture from which state they belong. So we understand that how we can serve the knowledge or serve the technology or the new innovations to them in such a way that it is very easy to digest that particular innovation mentally to the farmers. And then how, with slowly by seeing is believing and learning by doing, how a small demo plot in a farmer's backyard can scale up to the 5 acres of 10 acres of adoption of that particular technology that we are very much, we have the expertise in. So we are one of the partners who are not into tech domain, and we have been really working very hard, and in many states we are associated with Arya.ag, and we are also being an independent partner. We are very much happy that the scale that Arya.ag is achieving in this project of smart farm centers. The answer is yes. Wherever we find the value or there is a requirement for the farm community and there is a player who can offer it, it's open. Just only one piece of thing is that we have a very strong filter of quality and track record checking, which we do. So each of the partners here, we have gone through a evaluation process where we evaluated multiple companies in the same piece and even tried some of them to check their technology. Then we have done the selection. So that's the only one binding thing, that the quality we have to ensure, because it is coming from the our thing. Otherwise, yes, we are open to. See, as long as relationship will always be a two-way process. So as long as the value is added to both the partners, the relationships will continue. We will keep on exploring any other value add to the farmers, and we will then onboard it. So this is what we have started, is not the end. This is just a journey which is started. We'll keep on adding more services, layer it up as we proceed. Only after we have a clear-cut understanding of the value add it will have to the farmer. So the focus is to have a value add to the farmer. Either we get a buyer on board or the services make immense sense for the farmers to pay. Ambush Sharma, Agrotech Space. So my question is, what is the current rate of interest, average rate of interest in your warehouse receipt financing model? And do you plan to link UPI and other payment links for easier access and lower interest rates in the future? So I'll answer this into twofold. We work with 31 financial institutions. The lending rates to the farmers or the FPOs associated with the banks are the standard banking rates which are available to them. Since we are in an NBFC, the value add which we bring on the table to the farmers or the FPOs is not competing with the bank rates, but the speed at which we are able to deliver our loans to the farmers when they store the produce in us, which is as low as 10 to 20 minutes after the stocks are actually unloaded into the warehouse. So our average rates hover around 13-14%. They are not as high as the microfinance, because we understand that the stocks which are stored in the warehouse are the income which the farmer has to earn. And we have linked with a lot of payment gateways and all to ensure that this loan gets delivered on time. We have linkage with UPIs. We keep on exploring any more partnership which will help us to pass on the benefits to the farmers as we evolve. Our lending rates have
say our cost of borrowing has softened up, so we have passed on those benefits to the farmer as and when. So it has to make sense for both the parties involved. Yeah, I think we are a non-deposit taking NBFC. To that extent, our ability to reduce cost is linked to the market. So two things will happen as we grow in size. Once our rating improves, the ability to reduce cost will also increase. So naturally, our borrowing cost, once they decline, you will see an impact on the other side also. So hopefully, I think in future the rates, assuming that the markets are also going down with respect to the rates, as what we have seen with respect to Reserve Bank's indication. So accordingly, we feel that our rates will also go down because of the rating as well as the market. Hence, we feel that over a period of time, the rates to the farmers will also reduce. किसान आंदोलन हुआ था, उस दौरान 3 लॉ लाए गए थे एग्रीकल्चर के, उस दौरान ट्रस्ट ब्रीच हुआ है किसानों के बीच, तो ये कंपनियों पर ट्रस्ट वापस आए, इसके लिए क्या दिख रहा है कि वापस आ रहा है या कंपनियों पे, या फिर किसान अभी भी मिसट्रस्ट है ऐसे इस बीच में? हम अपने कंपनी के बारे में बात करेंगे, शायद पॉलिटिकली कोई आंसर देने की कोशिश भी नहीं करूँगा। जितना तक हमारा कंपनी का सवाल है, हमको आंदोलन से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किसान अपने माल अपने यहाँ रखे हैं और जब भी उसका मैच्योरिटी था, पैसा लेकर माल छुड़ा के चले गए। तो हमारे ऊपर उसके कारण, आंदोलन के कारण या कोई राइट ऑफ के कारण, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पर भी इलेक्शन होती है वहाँ पर सरकार लोन माफ़ की चर्चा भी करती है, तो उसका कोई प्रभाव आज तक हमारे 10 से ऊपर साल के कभी भी कोई साल पे भी प्रभाव नहीं पड़ा। आई होप मैं हिंदी राइट। दूसरा, किसान ट्रस्ट कर रहे हैं क्या? माल रख रहे हैं, हम उन्नति कर रहे हैं, इसका मतलब किसान भी ट्रस्ट कर रहे हैं। Any questions at the back? Yeah. All right. Before we break away for personal conversations, so our partners have brought their technology here. Please do interact with them and see what they have and any questions that you may have for them. So while you're having lunch or before that, you could just have a conversation with them. We are also available for any personal conversations right now. Thank you so much for being here with us. Really appreciate the time that you've given us. Thank you.